Okay, so hi guys, this is Gavin Roshan and आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पॉडकास्ट है। हम लोग वापस से आ रहे हैं वो बैटल रॉयल पॉडकास्ट की सीरीज लेकर के एंड आईफ्लिक्स जो कि हैदराबाद हाइड्रास के जाने माने कोच हैं एंड खुद एक्स प्रोफेशनल पबजी पीसी प्लेयर रह चुके हैं। उनसे हम लोग बात करने वाले हैं कि बड़ी टीम्स कहाँ लड़खड़ाई, उनकी टीम आगे का क्या गोल रखती है, टीएसएम के बारे में जो कि जीती है पूरा टूर्नामेंट, और लैंड टूर्नामेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, हर एक चीज बिहाइंड द सीन्स ऑफ द टीम्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो कि शायद आपको जाननी थी। हर एक टीम के बारे में यहाँ पर कॉन्वर्सेशन रहने वाली है। सो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, लाइक करना एंड शेयर करना एंड वेल बताना जरूर अगला आप किसको चाहते हो बैटल रॉयल पॉडकास्ट के अंदर। All right. So, first things first, iFlix, welcome on this Battle Royale podcast, a series that I have on my channel, which just, comes on from international to the national talents and everyone around. So, first things first, how are you feeling after that LAN performance? That's my first question. वेल लैन परफॉर्मेंस फर्स्ट लैन बीजीएमआई में मेरे टीम को सेकंड लेके आना मतलब सबसे एक प्राउडेस्ट मोमेंट है। वेल ऑफ कोर्स फर्स्ट लेके आता तो और भी प्राउड हो जाते, बट देन द सेम थिंग, द डबल एज स्वॉर्ड, वी गॉट सेकंड एट लीस्ट, बट देन वी गॉट टू नो द व्हाट द मिस्टेक्स एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट टाइम इवन फॉर द बेटर for defeating TSM, the defending or the champions basically for the LAN. And Yeah. I should say congratulations to TSM, and they really played very, very well. And basically, they made the less mistakes than us, so it's deserving team definitely. नहीं, that's actually nice the way आप एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हो यहाँ पर, एंड दैट्स एक्चुअली इससे ई स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम की कहीं ना कहीं जीत होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट द ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, आपने पबजी पीसी भी किया है, पबजी मोबाइल आप देख रहे हो। सो विद द लैन एक्सपीरियंस, आपका लैन एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर जब आप पबजी पीसी खेलते थे और अब एज अ कोच, वेयर डू यू थिंक वी फिट इन द एंटायर इकोसिस्टम? हमने कितना ग्रो किया है, कितना हम आगे हैं, कितना पीछे हैं, वो सब चीजें। Well, abhi jo recent, let's take the particular LAN which we just finished a second early. It was very well set up. और एक्चुअली मैंने सुना है कि ये 2 दिन में ही सेटअप किया था पूरा नोडविन ने, तो दैट इज लाइक फुल पावर फॉर नोडविन। एंड जितना जो भी है सोच समझ के किया था, और जितना कोविड प्रोटोकॉल सक्सेस है वो भी ध्यान में रख के किया था। पूरा बबल बनाया था फ्रॉम होटल टू द वेन्यू, स्पेसिफिक कार्स फॉर स्पेसिफिक टीम्स. So everything was thought very well. And then well, internet ka thoda bahut वैसे ping spikes and all, that is a definite thing for in any places. So that was also very less compared to what happened in the previous lands of even in the official lands, so that was even very less. And if you see, there is no video, nothing, no controversial, nothing about this particular land. It's only about first BGMI LAN just went very successful, and these are the champions, these are the runner-ups, and that is the only news we can see it in there. So that's a kudos to Nordwin and creating and then bringing up this tournament by Loco. Well, so all the positive vibes just coming down on the entire tournament. And अब मेरा आपके लिए एक पर्सनल सवाल रहेगा, पर्सनल इन द सेंस के इफ यू टॉक अबाउट अ टीम लाइक नोवा, राइट, उनके जो कोच है, ही इज आल्सो अ पबजी पीसी प्लेयर, ही हैज बीन अ पबजी पीसी प्लेयर। आप हैदराबाद हाइड्रास के कोच हो, आप एक एक्स पबजी पीसी प्रोफेशनल प्लेयर रह चुके हो, एंड सो आपके बेरल 6 टाइम्स एंड ऑल वो सब चीजें देखी हुई हैं पुराने टाइम से। सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट इट, वेयर डू यू थिंक मोबाइल टीम्स लैक इंडियन मोबाइल टीम्स व्हेन दे गो ऑन अ ग्लोबल स्टेज? आई गेट इट, हर कोई ये बोलता है कि 1.5 साल का गैप रहा है, 1.5 ईयर्स का हम लोगों का गैप रहा है, वगैरह वगैरह, बट आई बिलीव इट्स समथिंग more as well. I would say discipline issues कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा हमारी टीम्स के आते हैं, but what are your thoughts on all those things? Well, discipline issues, we have to start from that only. Like first of all, हमारे उतना discipline नहीं है, हमारे उतना I can say गिन चुन के 1-2 organizations I would say कि पूरा structured and discipline में चलता है. Still उतना भी discipline अंदर में नहीं चल रहा है, but बाहर से भी structured है. But then if you compare to then those names like Nova, bigger names, then they are very much structured, timely, and what is everything is in a proper manner basis. See, abhi we have to start take this esports as a normal professional work. Now we are also called as a professional esports, so we should be working or spending our time just like how a professional software a person might work in, like day to day ऑफिस है, वो 9 बजे जाता है और उधर वर्क करता है, उनका एक ब्रेक पीरियड होता है और उधर ब्रेक अपना कर लेता है,
एंड देन वर्क वापस चालू कर लेते हैं एंड देन शाम को कुछ 7-8 बजे घर पे निकल जाते हैं। सेम थिंग बट वी आर इन अ बूट कैंप, तो इतने टाइम की पीरियड होता है जो व्हाट टू से वार्म अप टाइम होता है, क्योंकि गेम से पहले डायरेक्ट उठ के जो आने वाला प्लेयर्स जो है उनको तो पूरा कैंसिल आउट करना ही चाहिए रहता है। एक वार्म अप रहता है, खुद की वार्म अप होती है पहली बात तो, ट्रेनिंग ग्राउंड्स एंड ऑल, एंड देन फिर आपस में टीम में कुछ क्लासिक मैचेस या फिर टीडीएम्स मैचेस जिसमें कुछ ऐसे बातें वगैरह जो है होता है, हाँ सेंटर में, मिडिल में, राइट में, लेफ्ट से आ रहा है, पुश कर रहा है, तो एक 2v2 इवन टीडीएम विल हेल्प आउट फॉर द कम्युनिकेशन। सो खुद का एक वार्म अप, हैंड वार्म अप, एंड देन खुद की टीम के कम्युनिकेशन, एंड देन गोइंग इनटू द स्क्रम्स, देन पार्टिसिपेटिंग फॉर दिस टूर्नामेंट। सो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे आप एक फुल फ्लेज फॉर्म में आ जाते हैं, एंड देन एक टूर्नामेंट चालू हो जाते हैं, तो उसका एक अलग ही प्लस पॉइंट दिख जाता है एक्चुअल में, हम्म। बट बहुत कम होते हैं ये चीज। ये सब कोशिश तो मैं ऐसे कोच भी करता अपने प्लेयर्स को भी, हाँ, बट 11:30 का टाइम देगा तो 12 बजे उठने वाले प्लेयर्स होते हैं। तो या बट देन स्ट्रक्चर नहीं है, वेल आई वुड या गिव दैट, बट देन धीरे धीरे वो फॉर्म भी हो रहा है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में भी ऑलरेडी फॉर्म अप हो चुके हैं, एंड देन वो लोग भी या स्ट्रक्चर ला रहे हैं, इंक्लूडिंग माई org as well, Hyderabad Hydras. या बट देन जैसे कि आपने बोला कि प्लेयर्स के लिए उठने का टाइम नहीं हो पाता, प्लेयर्स नीड देयर ओन टाइम एज वेल। दिस काइंड ऑफ जस्ट ब्रिंग्स अप ऑन अ रियली गुड पॉइंट। जब मैंने कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था बीटीआर के मैनेजर के साथ, उनके कोचेस के साथ, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि उनके रीजन में जब एक दिन का शेड्यूल रहता है, द शेड्यूल इज वेरी रेगुलेटेड कि प्लेयर्स ट्यूसडे वेडनेसडे को गेम्स खेलेंगे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे को गेम्स खेलेंगे, मंडे और थर्सडे उनके रेगुलर स्क्रिम्स में भी मंडे और थर्सडे को ब्रेक रहेगा, जैसा एक्चुअल पीएमपीएल फॉर्मेट होता है बाहर बाहर की जगह पर। इफ यू टॉक अबाउट आवर ओन रीजन, आपको पता होगा बहुत ज्यादा रो पीट के बोल बोल के मंडे का एक ऑफ दिलवाया था प्लेयर्स को। डू Yeah, यू yeah. थिंक दैट इज इनफ? बिकॉज आई वुड से इस एज में जब स्लाइटली टीनेज होते हैं प्लेयर्स, और उसके बाद फिर ट्वेंटीज, अपनी अर्ली ट्वेंटीज, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं, अर्ली ट्वेंटीज देख रहे हैं, स्लाइट टीनेज है, डू यू फील कि वो मेंटल प्रेशर एक्चुअली ईट अप करता है प्लेयर्स को? यस, आई वुड से कि डेफिनेटली हीट अप करता है, बिकॉज मैं खुद एक प्लेयर रह चुका, ई स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुका हूँ, तो उतना तुम जब रगड़ रहे होते हो यार, वो धीरे धीरे उसकी इफेक्ट जो है, मे बी राइट नाउ यू माइट सी सम गुड थिंग्स, बट देन वो जब तुम कंटिन्यूस करते रह रहे हो ना यार, तो बाद में वो इफेक्ट तुम्हें पड़ता है, वो तुम्हें बाद में वो मेंटल भी पड़ जाता है, और देन गेम में भी दिखना चालू हो जाता है वो। सो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला, एक प्रोफेशनल जो रिधि रखना है, वो ये अभी जो चल रहा है वो प्रोफेशनल नहीं है, देन बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग एट इट एंड गोइंग एट द फुल, या it's not the we are doing the hard work, but mainly we should do the smart work. या Smartly we should grind it, not like कि full fledged यार हर हफ्ते हर दिन बस कंटिन्यू यही करते रहो, नहीं होएगा। So we should be time and structured, जैसे कि एक प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर पर्सन को कैसे एक संडे को ऑफ दिया जाता है, या फिर सैटरडे को उसको जल्दी से हाफ हाफ दिन होता है, बाकी दिन वो लोग ग्राइंड करते हैं जो अपना सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वैसे एक प्रोफेशनल सिस्टम में यहाँ पे भी लाना चाहिए। और देन वही आपने बोला, रगड़ रगड़ के आपने एक मंडे को लिया था, और वो भी अभी भी उसका उसमें भी भंग चल रहा है, बट देन हाँ, उतना नहीं चल रहा है, क्योंकि हम थोड़े साथ सारे प्लेयर्स एक साथ मिलके ये चीज बोला है, तो अच्छी बात है कि ये चीज लाया भी है, क्योंकि पहले नहीं था। या अभी दैट्स ट्रू। लाया भी है, तो इट्स गुड। सो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा बहुत और स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, तो और अपन अप होते जाएंगे। बट देन आई वुड से, डोंट यू थिंक कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स जो कि रहते हैं उनको भी ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए? बिकॉज वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हर चीज को देखते हैं, उनके लिए उनके व्यूज, उनकी सुपर चैट्स, उनके टूर्नामेंट्स के प्राइस पूल्स, उनके लिए वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव बन गया। बट इसमें कहीं ना कहीं प्लेयर्स पिस रहे हैं, एंड यही प्लेयर्स जो कि पिस जाते हैं, आई बिलीव जब ग्लोबल कंपटीशन की बारी आती है, कोई भी ऐसे कंपटीशन की बारी आती है, दे आर नॉट थिंकिंग विद द स्ट्रेट माइंड्स इन दोज टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर ही उनको पूरा निचोड़ लिया जाता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट थिंग एज वेल? बिकॉज एक तरफ बिजनेस चल रहा है एंड उसके कारण प्लेयर्स सफर कर रहे होते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? वेल डेफिनेटली बिजनेस चल रहा है, अभी उनको भी उनका धंधा तो चलाना है, बट प्लेयर्स नहीं है तो क्या ही धंधा चलाएंगे, वही है। हाँ, तो बहुत सारे क्लैशेस भी आपने देखे होंगे यार, सेम टाइम पे ये हो रहा है, सेम टाइम पे ये हो रहा है, अभी प्लेयर्स देख रहे हैं कि यार अभी जाऊं किसमें हम। तो फिर भी वो लोग क्लैशेस भी वो निकालने के लिए एडजस्ट करते हैं, जैसे ये गेम खत्म हो जाए दूसरा चालू हो जाएंगे। एक्चुअली टुडे जस्ट नाउ माय प्लेयर्स आर प्लेइंग 12 गेम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अभी ऐसा करना पड़ा है कि, क्योंकि अभी अभी जो हुआ है, एक टूर्नामेंट है, एंड देन उसकी टॉप 6 क्वालिफाइड, एंड हम लोग ने चिकन डिनर ले लिया।
तो आई एम प्रीटी श्योर माय टीम हैज गॉट द इनफ नंबर ऑफ पॉइंट्स अंटिल थर्ड मैच में ही खत्म कर लिया था। तो Oh. फोर्थ मैच में जेन्युइनली जेंटली खेलो, बस 6 पॉइंट्स निकालो और तुम मर गया तो भी चलेंगे। तो ऐसे देना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस, क्या फिर उसके बाद तुम रश ले लो। लाइक लिटरली ऐसे करके मैं अभी आया भी हूँ, नहीं तो फिर Okay. इसलिए मैं ये पॉडकास्ट के लिए भी थोड़ा लेट हो गया था, Oh, तो no, आई एम no. रियली I सॉरी फॉर दैट No, आल्सो। no, no, no. I get it. I totally get it. Because obviously I get it कि जब एक इंसान बिजी होता है, it's like you're loving your job at that side as well, and वो कहीं ना कहीं हाँ। दिखता है, प्लेयर्स में भी दिखा है obviously। सेकंड पोजीशन तक लेकर के आए हैं खुद को इस लैन इवेंट के अंदर, if we talk about it, but then talking about the LAN event and all those things, हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स हमें पता है काफी अच्छा कंपोजर रखते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट टीम, बहुत सारी टीम्स है जो खेल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेल रही हैं, बट देन बहुत कम होती हैं जो स्ट्रीम कर रहे होते हैं। डू यू फील इट्स नेसेसरी कि आपको अगर एक अच्छा प्लेयर बनना है तो यूट्यूबर बनना भी जरूरी है? बिकॉज मेरा माइंडसेट आई वुड से कुछ अलग तरीके से चलता है इसमें, एंड दैट इज के जब आप स्ट्रीम करके अपने टूर्नामेंट पीओवी स्ट्रीम कर रहे होते हो, आई वुड से इट्स लाइक चाहे आपको लाखों लोग देख रहे हैं, बट उन लाख में 1000 लोग ऐसे भी होंगे जो आप ही की स्ट्रैटेजीज आपके अगेंस्ट यूज करेंगे एक टूर्नामेंट में। सो डू यू फील इज दैट नेसेसरी कि आपको अपने टूर्नामेंट पीओवी स्ट्रीम करने हैं? बिकॉज बहुत सारी टीम्स हैं दैट आर एट द टॉप राइट नाउ, दे डोंट स्ट्रीम देयर टूर्नामेंट पीओवीज। कभी जीत गए तो उसके बाद एक क्लिप डाल देते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? मेरे थॉट्स ही, आई एम आल्सो ए स्ट्रीमर प्लस आई वाज लाइक प्लेइंग फॉर ई-स्पोर्ट्स एज़ वेल एज़ स्ट्रीमर। तो हम मेरे मेरे को भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, लाइक व्हेन नॉट ओनली जस्ट कॉपिंग द स्टैट्स, लाइक तुम्हारे टीममेट्स के साथ जब कुछ ऐसे बातचीत होता है तो शायद वो एक अलग लेवल पे पहुंचते हैं, पर वो हमारे टीममेट्स को पता है कि हम ऐसे ही बात करते हैं, बट देन सामने वाले बंदे उसको इंटरप्रेट, जो देख रहे होते हैं वो लोग अलग इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज ये एक सीरियस टूर्नामेंट में और इसमें सीरियस बातें ही होएंगे, वैसे ही हाँ उस लेवल पे ही होएंगे। तो दूसरे लोग भी उसको अलग चीज अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है और फिर देन वो डीएम्स आना चालू हो जाता है वगैरह वगैरह। ये सब एक्चुअली एक्सक्लूड करना चाहिए। एंड देन अबाउट स्ट्रीमिंग पार्ट, स्ट्रीमिंग एक चिल चीज रखना चाहिए फॉर ई स्पोर्ट्स प्लेयर। Like whenever they are having fun scrims, whenever they like maybe practicing for the next upcoming, शायद 5 बजे टूर्नामेंट हो रहे हो एंड देन आप 12 बजे एक स्क्रम्स खेल रहे हो इसके लिए, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, तो वो तुम जरूर कर सकते हो स्ट्रीम। तो वैसा तुम अगर 3 आवर्स पुट आउट कर लो एक स्ट्रीम पे एक दिन में, स्टिल गुड इनफ है। तो टूर्नामेंट पीओवी डायरेक्ट टू डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करना इज नॉट अ प्लस पॉइंट फ्रॉम माय साइड एज वेल, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स है उसमें। और इवन इफ यू पुट 100% ध्यान उस गेम में, स्टिल ऊपर ऊपर कुछ देख के चैट वेट पढ़ लिया, देन मेंटली भी डिस्टर्ब ना होना चाहिए, हाँ कुछ भी हाँ हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑल लाइव इनफ एंड इट्स जस्ट लाइव, राइट? सो शायद आप कुछ बोलना चाहते थे बट देन ऐसे बोल नहीं पाया, पर कुछ भी हो सकता है। तो या बेटर जस्ट keep your mind calm, no one is watching you, just play, you focus on your game which is a tournament, and just give the full out on that tournament. And while you are in a fun time, maybe you not only even BGM, you can play other games also for your fun time, and या you can stream those as well. That's true. That's true. And let's talk about this LAN tournament in a bit more Yeah. detail, in a bit more depth, right? Because if we talk about the LAN tournament, 70 to 80% of the players were new, जिनके पास LAN experience नहीं था। जो मैं बोलूंगा जो पिछले गेम के बैन के टाइम से स्टार्ट हुए मे बी, या फिर लास्ट टाइम के पीएमसीओ से निकले और यहाँ पर आए। सो व्हाट डू यू थिंक उन्होंने ऐसा क्या किया दैट द बिग डॉग्स, जो बिग गन्स बोला जाता है, जिस तरीके से बिग हाउंड्स बोला जाता है कंपटीशन का, इफ यू टॉक अबाउट जैसे गॉड लाइक हो गया, दे वर सपोज टू बी फैन फेवरेट्स, दे आर फैन फेवरेट्स इन फैक्ट। टीम एक्स पार्क बहुत ज्यादा फैन बेस उस टीम का भी है, बट देन व्हाट डू यू थिंक लैन में ऐसा क्या हुआ कि वो टीम्स परफॉर्म नहीं कर पाई, एक कोच का पर्सपेक्टिव? Well, it was expected for also me also from the coach perspective. We can say कि I already considered them as a competitor. Like हाँ, we have to look out for this teams like EXO हो गया, SG हो गया। अभी उसमें मैंने Godlike को भी डाला था, तो I was also surprised enough that कि Godlike was not able to come up to the mark, or I was expecting them at least in the top 5 list, but they entirely were not able to catch up to that first page. So I would not say maybe a tough day for the players, or you can also say that the LAN was partially LAN as well, because Yeah. the most pressure comes when the LAN is the audience, right? When the audience are crazy enough to put a huge amount of mental pressure and mental instability for the players whom they are not cheering, and put a lot of confidence into the people who are there cheering for, like Jonathan 3 बार बोल दिया और हाँ उसने अगर सुन लिया भाई, जोनाथन तो फायर अप हो जाएंगे।
तो मेरे को लग रहा है वो एक फायर अप भी शायद मिला नहीं है। सो एट द सेम टाइम स्टिल जो टॉप में फॉर एग्जांपल एक टॉप 8 टीम्स को डेफिनेटली वो प्रेशर फिर भी फुल फील हुआ रहेगा, क्योंकि लैंड पे बैठा है तो मोबाइल लेके बैठा है, कैमरा तो घूम रहा है आमने सामने, भाई कैमरा तो जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं, ऐसा मन में आता ही है। तो मेरे प्लेयर्स को भी ये चीज हुआ था। तो माय इन फैक्ट माय प्लेयर कैरी कैरी वाज द मोस्ट प्लेयर व्हिच गॉट अफेक्टेड बाय लाइक थर्ड डे हाँ। पे फर्स्ट फर्स्ट मैच पे अच्छा नहीं गया था, लाइक ऐसे बैठ गया था कैरी लिटरली सर हाथ पे मतलब। और फिर ब्रेक में आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कोच, आई नीड टू पुट सम वाटर और समथिंग, कोच यानी कि मतलब मेरे को सर दुख रहा है कोच, तो लाइक हाँ। चिल ड्यूड, लाइक वी लाइक then I have to like motivate them and let get them in the straight path so that उस path पे चले। तो वैसा होता है कि लैंड प्रेशर भी है, सो प्रेशर प्रेशर भी था, बट देन लेट्स से कि वो टॉप 8 टीम को प्रेशर था, क्योंकि क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा था कि वो टॉप 7 टीम्स के पास इतने पॉइंट्स थे कि वो एक चिकन डिनर पे ऊपर ही आ जाएंगे और किसी का कार्ड लेंगे, या तो उधर वो प्रेशर तो दिखाई था। आई जैसे आपने लास्ट डे की बात करी, आई वांट टू पोर्ट्रेट टू सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं जानना चाहता हूँ दोनों सिनेरियोज में क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। मेरा मार का 2v4 एनिग्मा का, मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें, बिकॉज हाई ग्राउंड आपके पास था, हाई ग्राउंड से फाइट लेना थोड़ा इजी भी रहता है, ऑल्दो लो ग्राउंड वालों को सिर्फ हेड दिखता है, अगर ऐसे बात करी जाए तो ऑब्वियसली वहां पर भी एक सिचुएशन बन जाती है, दैट्स वन ऑफ द सिनेरियोज। एंड देन द फाइनल गेम जिसके अंदर हैदराबाद हाइड्रास, देखिए हमें पता था पॉइंट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया था, बट जो फाइनल 4v4 फाइट टीएसएम के अगेंस्ट एंगेज हो रहा था, सो इन दोनों सिनेरियोज में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है आपकी टीम कहां पर लैग करी। Well, first of all, the Miramar match, like I was watching from the public section where we are allowed to watch, right? So I was like, yeah, this is a definite thing. My players will never, ever, because they had the highest point and they had the players in the zone out as well. And striker was just constantly keeping down Evo from the out of जी। the zone. So there was just only, they already knew the information that only two people had arrived and it's the same team. Every information was there, but then गलत तो वही है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ और ओवर कॉन्फिडेंट में चला गया थोड़ा। वो 1v1 लेने की जरूरत नहीं था, जबकि तुम एडवांटेज पे भी थे एंड थोड़ा सा वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। दे शुड हैव अप्रोच्ड इन अ वे ऑफ 1v2, जहां पे अगर एक नॉक दिया भी दूसरा बंदा ट्रेड कर सके, हम्म। तो वो चीज वहां पे गलत हो। और वो ऑलरेडी तभी के तभी आते ही मैंने तभी कुछ बोला नहीं, यार चिल करो, ठीक है तुमने 5 पॉइंट लूज किया है, बिकॉज वो 3 किल मिल जाता और 2 डिफरेंस पॉइंट, बट देन 5 पॉइंट लूज किया और 7 पॉइंट तुमने एनिग्मा को भी दिया है, तो वो भी हाँ। सोच लेना। बट देन लीव इट आउट, विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट मैच। एंड जो बिकॉज पिछले मैच में भी हम लोगों ने कमबैक ही किया था, पिछले डे पे हम लोगों ने 69 पॉइंट्स निकाला था पूरे 5 मैचेस में, तो in that also the first match was really set down, so same happened in the second one, but then there was a lot of points still in the tables when you come up with the table of second, that Miramar match, we were still on the top even with Enigma coming up to be the chicken in a person, या chicken in a team. So like I encourage the team a bit. Yeah, we'll not discuss this now. Okay, let it be. 5 points lost. It's okay. We'll make it up. We need the 70 points. 70 points was the aim of that day. So we need that rest of the 70 points. So we should just focus on that. 3 more games remaining, and you can definitely take that cup off. So then थोड़ा बहुत boost हो गया एंड हाँ फिर जाने दिया, जैसे कि बिकॉज तभी तभी के तभी वो सब करना नहीं होता, नेक्स्ट गेम 5 मिनट में चालू हो हाँ। जाता है, तो वो दिमाग में रखना नहीं है। फटाफट या इराक ला रहा है भाई, सेवरनी के सामने खाली है, राइट साइड खाली है, बस ये रोटेशन ध्यान में रखो, सब भूल जाओ जो मिरामर में जो हुआ, बस इराक पे ध्यान दो, बस ऐसा था। सो देन अबाउट द लास्ट मैच, या so last match was we were in hashtag 4, and then we had an 11-point difference between hashtag 2 and hashtag 3 because they were of the same points. So and we wanted to aim for the first only, even if that was like a 20-point difference or 21 point. We wanted to still aim for the first only. So I and my players decided that we should get the chicken dinner only, even if it goes passive ways or even if it goes in the harder ways, we'll definitely aim for the chicken. And yeah, then coming up to the
well, they placed themselves so much better in these compounds, and there was one decision taken by Ace Black which was very good, that he had the circle. Still, he went in to scout to the center of the part, and the Okay. center compound was really clean out, and then he took all the players along with to confiscate the center building, even if he had the circle of that particular zone, and that decision was very well smartly made by Ace Black, and that's how we got that center coming into the next circle as well. And then TSM was on the other side of the road. Yeah. So of course, TSM was having one part of the zone. Uh, the thought was very simple, that we need to take insane kills, but then that was also being taken down by TSM. We got like we were trying for to take a knock on TSM as well to get an advantage, but TSM played really well. The mistake that happened, or you can say even TSM played really smartly, because the smokes that TSM put out from the other side of the road was Yeah. literally on the windows of my players. So Yeah. it really viewed out the what to say, eye vision of my players, and as well as I don't remember that one player, was it Ninja or Equinox? He air fisted and Jump and punch. Yeah. jump fisted and keep on doing that jump, and then coming into the ridge of my players, just downwards. So after the first nade, we got to know that there is one player below down there. Yeah. So then it was like already an advantageous stages for the TSM, because they already approached very closer to us, and we were surprised in that factor. And the plus thing what they did was they didn't stop to that particular push. They keep on ranging on us. So we took we took the hit there. So that's how the thing happened. What we could have done, we could have made a particular person like carry from the other part to have another angle where we can smoke out and take a position where he can kill out whoever is crossing the road, basically. Yeah. A different position that could have Yeah, made, a different surprise yeah. aspect, you can say, because they would not have done that if that was there. At least peer pressure, keep them in pressure so that they should not do that particular thing which they did. But that was a mistake, because we have 4 men alive and we are 4 men strength there, so we should have done that with at least one person, and the 3 people can still cover that person, right? So that Yeah. was a peer mistake. It's kind of a thing, like TSM actually has one of the highest final circle win rates as compared to any other team in the Indian ecosystem nowadays. Like they play with a different IQ. अगर आपने देखा, जैसे कि आपने जंप पंच की बात करी, वो हुआ फर्स्ट डे के लास्ट गेम में एनिग्मा को 2v4 करने के लिए बगी के Enigma ऊपर could do it for, like, yeah, buggy के ऊपर smoke करके and exporting out it. Enigma would never even guess to that. I asked like talked with the Enigma and even the Enigma coach, so Yeah. they never even guessed. So the TSM, they are using so much brain power there, like in the end Yeah. circle. How can we take that simple advantage where no one even expect to do so? So that happens. Yeah, that's actually just a weird different vibe that comes up from the team, and kudos to the Indian ecosystem मैं बोलूंगा, जो कि सीख रहा है एक दूसरे टीम से, right? कोई ये करता है तो दूसरी टीम अंडरस्टैंड कर रही है, सीख रही है, they're just getting good. But how different do you think it all would have been अगर PUBG मोबाइल बैन ना होती इंडिया में? आज के टाइम पर इकोसिस्टम कैसा होता, ग्लोबल टूर्नामेंट्स में हम कैसे होते? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? यार बहुत ज्यादा बुरा चीज हो गया था ये चीज, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर द टाइम जब पबजी बैन हुआ था, तो तब वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे हम वर्ल्ड लीग खेल रहे, और हमारे इंडिया की एक टीम OR Esports, जहाँ पे स्काउट के वहां भी पूरे लाइनअप थे, गिल एंड वीरू, हाँ. वो लाइनअप सेकंड आए थे, एंड दैट इवन यू कैन से एक मैच पहले तो उन लोग ने तो फर्स्ट में थे, एंड देन Yes. फिर वो आई स्टिल रिमेम्बर द पोचिंगी वाला सर्कल के नीचे वो शैक में वो लोग बच के देन बाद में वो लोग वो पॉइंट्स टेबल पे फर्स्ट आ गए थे BTR. बट at that stage, like we were on that level where we were competing against even BTR, like once BTR was this level for us, and we were competing against them. Yeah. So वो धीरे धीरे वो रेज हो रहा था हमारा भी, जो बोलता है गेम प्ले, गेम स्टाइल्स, and we were learning a lot, and there were so many opportunities, chances, but सब कुछ एक झटके में सब कुछ ऐसे बंद हो गया. तो
उसके बाद then government ban, now we cannot go against the government, so people has to stop streaming on those, and then they had to come up with different streaming, like for example Valorant games and all different games. Many SHL content creator participated. They used to have Yeah. that Valorant versus Valorant, lobby हाँ. versus lobby things and all, so many. And that also gave a race to Valorant game also. It's like a PC game को भी थोड़ा सा ऐसे पुश मिला है, वहां पे Valorant को ज्यादा पुश मिला है, तो जी. उस टाइम से बहुत ज्यादा ऑडियंस Valorant पे आ चुके थे, बिकॉज सिंस पूरे SHL की कंटेंट क्रिएटर यू कैन से, मॉर्टल की इंक्लूडिंग स्काउट इंक्लूडिंग सब मिलियन वाले बंदे सब Valorant खेल रहे थे, सारे ऑडियंस को Valorant क्या है समझ में आ गया। जब एक गेम समझ में आता है तो वो लोग देखना अच्छा मतलब पसंद करेगा Yeah. ना, राइट। पर Yeah. इससे पहले तक क्या हो रहा था, सब पबजी खेल रहा था, सो सब पबजी में पड़ा हुआ था। देन पबजी बैन गया तो वैलोरेंट तो पीसी पे भी अप हुआ है, बट देन हमारा डिप भी हुआ है। सो हमारा गेम प्ले पे डिप हुआ है। बहुत अच्छे प्लेयर्स जो अभी पता नहीं क्या लेवल पे होते हैं, तो हाँ. उनके लिए तो बहुत बुरा भी है लग रहा है। And जी. then also if you see teams like even Team Soul right now performing like Akshat हो गया, Omega हो गया, ये सब हम्म. लोग उधर से ही ग्राइंड करते आ रहे हैं। तो मुझे वो भी दिख रहा है कि जितने लोग उस बैन पीरियड में भी ग्राइंड कर रहा था, उनको भी एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट मिला, इंक्लूडिंग TSM। TSM वाज आल्सो ग्राइंडिंग। Yeah. सो या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आई मीन टीएसएम ने ग्राइंड किया, एक बहुत अच्छी टीम निकली है, न्यू सोल, जो कि हम लोग जिसकी बात करते हैं अभी भी उसको नया सोल इसलिए बोलते हैं बिकॉज पुराना सोल एक अलग इमोशन बन रखा है, एंड देन वी कॉल इट हाँ द न्यूअर सोल एज वेल। बट देन या अगेन वी नो अगर ये टीम यहाँ पर होती डेफिनेटली रिजल्ट्स जो कि ऑडियंस को चाहिए वो लाने की कोशिश हाँ, जरूर करती, मेरे बट पुराना सोल में ऐसे कि कंटेंट क्रिएटर्स एंड देन बिकॉज दे आर विद दीज बिग नंबर्स, बिकॉज दे विल नॉट डेफिनेटली गेट इनफ टाइम टू कंसंट्रेट ऑन टुवर्ड्स जस्ट अस ई स्पोर्ट्स, देन हाँ. एट द सेम टाइम बाकी प्लेयर्स इतने सारे ग्राइंड करके आए, तो इतना कंपटीशन तो पिकअप करने के लिए along with the content creation, along with the YouTube channel streamings and all with the brands and all cop up करना बहुत ज्यादा difficulty था। तो it's I think it's a Yeah. good step that they picked up this the whole people who are solely into this mainly not just not I'm not saying they're not creating any content, but main focus is where going for that esports scenario, Yeah. and that's why it's working right now so much better. या एंड टॉकिंग अबाउट योर पर्सपेक्टिव, एक कोच की नजर से what is the definition of a good team, a good team in any e-sport like Valorant? जैसे आपने Valorant की बात करी, Valorant में अगर आपने BGMI की बात करी, BGMI में अगर हम गेम फॉर पीस की बात करें, चाइना के गेम फॉर, वो एक कोच का नजरिया क्या होना चाहिए एक गुड टीम ढूंढने, बनाने, मेंटेन करने के लिए? Well, if I want to pick up players, then first of all I will go for the roles basically, because वो definite होता है, Hmm. and then the next roles are picking up roles are very easy, like you will get a lot of assault or you get a lot of fights, but then to make up that coordination is the hard part. So उस coordination के लिए मेरे को ऐसे बंदा चाहिए जो actually communication में ज्यादा ये दे ध्यान दे, Hmm. because अगर तुम equal communication ना दे, देन उस टीम को वर्कआउट करना, उस टीम को कोऑर्डिनेट करना बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। और कोऑर्डिनेशन की सबसे मेन पॉइंट कम्युनिकेशन ही होता है। इफ यू डोंट पास आउट इनफ इंफॉर्मेशन टू योर प्लेयर्स, देन योर प्लेयर्स विल नॉट नो, एंड आल्सो यू शुड नो हाउ टू पास आउट इनफ इंफॉर्मेशन। तुम्हें कैसे बात करना चाहिए, तुम्हें किस हिसाब से बात करना चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाए, Yeah. वो क्या बोल रहा है। देन उस प्लेयर को जब समझ में आ जाएंगे आपका पीओवी, देन आपकी आपकी जो पीओवी के हिसाब से भी वो खेल पाएंगे, और वाइस वर्सा भी होता है। तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट आई वुड से इस कोऑर्डिनेशन को लेके रखना, एंड देन with the roles coordinating each other, PUBG team will slowly rise by the grind they produce inside the game. That's So true. And I would say I just have, one last thing to ask you, and that is with BMOC round 4 coming, BMPS coming, what's next for Hyderabad Hydras? Vision क्या है अभी Hyderabad Hydras की अगली? well, विजन तो पूरा है कि यार the same lineup to go up to the highest of the highest level, but वो तो पूरा हैदराबाद हाइड्रास के लिए, बट मेरे विजन मेरे टीम को लेके ये है कि मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप भी चलाता हूँ। सो सपोज अभी लैन आया था, तो पूरा लैन के लिए पूरा प्रिपेयर हो रहा था, लाइक लैन में कौन क्या है, किधर उतरना है, क्या है, हाँ. मतलब which are the places which is clean, and then how to it's always a tournament perspective for me, because next tournament आ रहा है, ओके भाई अभी इस टूर्नामेंट में वर्क कर लेता है, एंड देन इस टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशंस, एंड देन एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म, and then applying it to the players within the scrims and all थोड़ा बहुत, and then
that with that useful with the use of those grind, then tournament आते समय we'll do something good. Sorry for that. Wish them wish them all the best from my side. Wish them all the best from my side, I would say. Yeah, definitely. So it's basically on tournament basis we do approach. Yeah. But then I would just say, this was a really insightful conversation for me as well as I would say the audience as well, because जब से performances और teams इस तरीके से उठ रही हैं, हैदराबाद हाइड्रास अगर पहले के टाइम के टीम तमिलास की बात कर रहा है, the team has been there, the team has just showcased its utmost performance, but अब ये जो लैंड टूर्नामेंट है इसने एक नया विजन दिखाया that yes, the new teams are rising. New teams as in एक बहुत पुराने वेटरन्स थे एंड देन वहां से एक मिडिल एरा की टीम से और अब एक न्यू एरा की टीम से, ये दोनों टीम्स, ये दोनों एराज राइज कर रहे हैं एंड फॉर New दैट players are rising like Ninja Yeah. Goldman. Yeah. Exceptional player, like to have that much of fragging difference between a top person like 37 and then my player Maxi, 24 I think. So that to make that difference is a really hard thing, and I'm really loving that new talents are actually showing up, but at the same time I want the old talents to have a clash Yeah. between these new talents, like Johnny भाई बस जिस चीज में अगर आ जाए बस मजा आ जाएंगे वो फिर देखने के लिए आई मीन जो नए टैलेंट्स है वो एक ऐसी सड़क पर भागना जरूर चाहते हैं जहां से उनको पता है फिनिश लाइन क्लोज है, बट उनको वो रास्ता दिखाने के लिए वेटरन्स एक बार के लिए वो इशारा जरूर करने का बात रहती है, बिकॉज उन्होंने उस रास्ते पे भागा हुआ है. सो दैट्स एक्चुअली अ रियली रियली गुड थिंग जो कि आपने यहाँ पर बताया. एंड इसके बाद मैं आपका ज्यादा समय और नहीं लूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड आई विश यू एंड द टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स एंड मे बी अगले लैंड में, ऑडियंस लैंड में, जैसे भी विल सी ईच अदर अराउंड एंड विल हैव अ लॉट ऑफ फन अगेन. Thank you. Yeah, I will be seeing you definitely for sure. Okay. Thank you. See you in the next land, bro. Bye. Thank you. Well guys, so ये था पूरा का पूरा इंटरव्यू. अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना. 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हम लोगों का गोल जरूर है एंड कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आप किसको चाहते हो एज नेक्स्ट गेस्ट ऑन द बैटल रॉयल पॉडकास्ट. मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, स्टे ऑसम एंड पीस आउट गाइस. हैव अ रियली अमेजिंग डे. टेक केयर. बाय बाय. मत कर टाइम पास, तेरा फ्यूचर होगा इन द स्ट्रीट्स. देख हमने टाइम पास की बना दी इंडस्ट्री. चिल करके छापा पैसा मिल गई जैसे ड्रीम जॉब. मैं ही नहीं मेरे जैसे स्क्वाड में है 3 और. देख मेरे साथ स्क्रीन के उस तरफ रखे तू पैर. मालूम नहीं चलेगा रात से हो जाती कब दोपहर. प्यार हो या गाली यहाँ सब कुछ पड़ता मुंह पर. तभी लाइफ वाली गेम में हम रोज करते लेवल ऊपर.